Okay, so yes, welcome to this live session on the Python programming. Okay, so today we are going to see the last topic uh, that we have not conducted in the last session. That is the, I think, what is that topic? Yeah, yeah, it is exception handling. Yeah, so we are going to cover that topic, and after that, we'll start with the OpenCV. Okay, so yes, let me start with my Jupyter notebook. Yeah. So I have already shared this PPT with you or Jupyter notebook with you. So yes, you can go through it and you can execute the small example that I have taken. Yeah. So and after this session, I'm taking some break for the some question. If you have any question regarding the Python, any topic or any points, if you haven't understood, yes, we'll solve your doubts, and then after that we'll start with the OpenCV. Okay, so because if you are starting with the advanced topic in Python, yes, actually you can't go back to learn the basic topics. Okay, so yes, that is a necessity for the advanced topic. Okay, so yes, so we'll start with the exception handling. So be ready with your question. After completion of this topic, we'll take the some question answer session. Yeah. So yes, yes, so we'll start with the topic called as a exception handling. So yes, what do my exception? Yeah. So whenever we are writing any program, whenever we are writing any function or class or somewhere, any program, any part of the program, might happen that you are getting some errors. Now you can get the errors at two times or two stages. So you can get the error at the compile time. Most of the fresher are getting this error at the compile time. But once you know the once you know the syntax of the programming, actually the compilation errors you are not getting so much. But might you get the error at the execution time? So that is called as the execution time error. Okay, so here we'll discuss about the compile time error also, and just the execution time error also. So these exceptions are called as the runtime error or the execution time error. Yeah. So yes, the error that occurs during the compilation are called as a syntax error. Yeah. So these errors are come if you don't know the syntax. Suppose if you don't know how to write down the definition, how to write down the comprehension, then might you have done some mistake while writing that statement. So yes, at that time you get the syntax error, like the statement missing semicolon. That is the most common error in the C language. Yeah. Here the unknown variable. Yeah. So some variables are unknown. So that are called as a compilation time error. So this error will come at the time of compilation. Okay, so if the error is come at the time of compilation, that is called as a syntax error, and that can be easily removed, because when you are getting that error, you are actually getting that what is the which line is responsible for getting that error. So yes, you can easily go to that line and you can fix that error. Like if you miss the colon in front of the if, yeah, so you can fix there by just putting the colon in front of it. So that is called a syntax error. Okay, and the error that occurs during the execution are called as a exception. Yes. So if all syntax is good and you are not doing any syntax error, yes, the compilation is good, and now you want to run your project. Okay, so if you want to run your project, and yes, half of the program is very fine, but suppose if you have given some inputs, and just for that inputs only, for the inputs only, your program get failed. So that type of the errors are generally called as a logical error. These are called as a logical error, because logical error get failed only for a particular inputs or the particular inputs. Okay, like suppose take an example of the divide by zero. Suppose you are doing a program of the two division. You are doing the program for division, and the first number you have entered as 5, and the second number you have entered as 0. So yes, which operation you are performing? 5 divided by 0, and practically the 5 divided by 0 is not possible. So yes,
5 divided by 0 not possible. So yes, the computer cannot perform this operation, so computer give the error. So what is that error? It's called the divide by 0 error. So it is the most famous error uh, while in a runtime. Okay, so yes, if you are doing the division, yes, make sure that the divisor should not be 0. Yeah, so that kind of the error is called as an exception. So if your program fails for a certain type of the inputs only, so that's called as an exception. That is called as an exception. Okay, so yes, we will more discuss about the exception later, but let's focus on the syntax error. Yeah, the syntax error occurs due to typing mistake done by the programmer. Yeah, so yes, what type of the common syntax error? Like leaving out a symbol such as a colon, comma, bracket, extra bracket, or some less bracket you have given. Suppose you started with the bracket with the circular bracket and end up with the curly bracket. So that is the most common errors. Misspelling the keyword, like suppose if you want to write out the for, but suppose while typing you make that f as a capital. So yes, there is a misspelling keyword. Yeah, some key that variable is there, so you have declared the variable with the myvar, and yes, while using that variable you have put the myvar in a some spelling mistake, like my variable. Okay, so instead of myvar you are putting a my variable. So yes, there is a misspelling of a keyword. It leads to the syntax error. Now there is an incorrect indentation is most common error in the Python made by the fresher. So yes, incorrect indentation means suppose some block you want to give, and yes, you are not giving the block. So block you can give by giving some tab in front of it. Yeah. So if you are not giving the tab in front of the statement, yes, there is a indentation error. So empty, if, else, while, for, function, f class, method, these are also the common syntax error. Suppose if you want to write down a function, but that function is not having any statement, you should write down the pass there, pass statement you should write down. So that's called the empty function. If you want to write down the empty if statement, yes, you have to write down the pass there. Okay, so that is compulsory. And if you forgot to write down the pass, yes, there is a syntax error. Missing colon is also the most common error. Colon, suppose if you want to write down the block, but before starting the block, the colon is must. The colon represent the next line is a block. So yes, if you are not putting the colon, there is also error. Incorrect number of the positional argument. Yes, we have already seen this. Yes, suppose if the function is taking the 4 arguments, but if you are giving only 2 or 3, yes, there is a error. That is incorrect number of the positional argument. Yeah. So yes, we take one example here. Suppose your def fun function is there, which is taking how many arguments? Yes, how many arguments? It is taking 0 argument. Okay, it is in 0 argument. But while writing the function, suppose if you have to write down this function as an empty function, you are not give here pass. So what happened here? So it will give the error, like indent, expected indented block. So it means that the fun function should have the statement, but you are not giving the statement for it. The next statement you have written without the indentation. So that's why he's suggesting that num equal to 25, it should have some indented block. So he's suggesting that it should have some tab in front of it. Yeah. So if you are doing this, so it is now having this error. Now num is not defined because num variable you are defined inside the function. So yes, outside the function it is not defined. So that's why it is a name error. Okay. So this kind of the syntax error generally we put. Suppose if you want to remove this function, if you want to remove this syntax error, yes, you have to write down the pass here, and now there is no error. Okay. Here also, suppose the num is greater than 20 you have used, and suppose the num you have not defined. Yeah. So yes, now here, if num has not defined, yeah, actually num1, I have to do num1 because num has been already defined.
Yeah, num1 is not defined, so the name is num1 is not defined, so it is also the syntax error. Or simply suppose you have defined the num2 equal to 20, but while writing here you have written the num1. Yeah, so there is also the error, like num1 is not defined. Okay, now here empty if block, suppose if you are written, then there is also error. Yeah, empty if block, so you are not writing here the pass, so yes, there is a error. So yes, if you write down the pass, there is no error. And suppose there is colon, if you are not written here, yes, there is a error again. So invalid syntax, colon should be there, colon should be there. Yeah, so such a kind of the errors you can easily remove just by looking at the program. You can easily remove that error. That is called as a errors. That's called the error because it is came at the time of the compilation. So if the error is come at the time of compilation, then it's called as a error. It's called as a error. But what is the exception? The runtime's error are called as an exception. So if the error is come at the time of runtime, when you are executing the program, if for a certain inputs, if your program get failed, then that is called as a runtime error. That is called as a runtime error. It's also called as an exception. It's called as an exception. Exceptions are detected by the Python runtime environment. Yes, the Python runtime environment is continuously running, and it is continuously monitoring your program. And if your program get failed due to some reason, that will be handled by the Python runtime environment. So it will be handled by the Python runtime environment. So Python runtime environment will throw the exception when there is a runtime error. It will throw the exception when there is a runtime error. So these are some examples of the runtime error, like memory related, like if there is a stack or heap get overflow exceeding the array bounds. Okay, so if you have defined the list having the size of 5 only, but if you are accessing the 7th element, yeah, that is not possible because the list is having only 5 elements. So exceeding the array bound, yes, is a memory related operation. Arithmetic related operation, divide by 0, yes, we have already discussed about it, divide by 0. Arithmetic overflow or the underflow, yes, this kind of the operation also can generate the errors. Others like attempting the file to be open which is not present, yeah, that is also the exception. Attempt to use an unassigned reference, yeah, so if there is a reference has been given, declared, and suppose you are accessing a reference which is not assigned, yeah, if the reference is not assigned and if you are accessing it, then that is called attempt to use an unassigned reference. We have seen already the example of this, like suppose num1 is not reference, but if you are accessing it, yeah, so there is a name error called name num1 is not defined. Yeah, so this kind of the exceptions generally can uh, get in the runtime. Yeah, we'll take the first example, yes, and how to handle it also. Yeah, so divide by 0, yes, take the two numbers from the user, like input integer numbers. So first enter number and integer, convert into the integer, and now we will divide it, a divided by b, and let's see what is the output. So if I'm giving the input as a 5 and the second one as a 2, yes, my program is perfectly fine and my program is not having any error. Okay, but suppose if I'm giving the input as 5 and 0, let's see here what error it generate the exception. The exception called as a zero division error. Yes, it generated 0. So it means that this program is good for the 5 and 2 input, but it program get fail when you are giving the input as 5 and 0. Getting that? So yes, zero division error, this error will get generated. Yes, students, are you getting this? If you divide by 0, yes, you divide by 0 actually not possible because divide by 0 is a infinity, and yes, we can't represent that infinity. That's why it gives the error as a zero division error. Okay, so here also the another kind of error, like a and b is defined, but you're trying to access d which is not defined. So yes, there is a name error, name d is not defined, so you are trying to access the variable which is on reference. Yes, so this type of the errors we generally get
but can I handle this exception? So what happened when you actually execute this program? This program is work very fine for the different type of inputs. But suppose if you are giving the input like 5 and 0, yes, the program get failed and your program is suddenly terminated. Okay, क्या होगा? आपका program suddenly terminate हो जाएगा. Whatever your program you are executing, that is suddenly terminated. So it will get out of the directly program. Okay, but this should not be happen. This should not be happen. Your program have some intelligence. We can add some intelligence to handle this exception also. So yes, we can add some additional program which will handle this exception. If this exception is coming, then how to handle this exception? Yes, we can add that code also. So we can add the try and except block to handle this exception. The statement which you suspect, suppose if you want to suspect that yes, this statement can generate the error, runtime error. So what you can do, you can actually put these statements into the try block. Now meaning is that try these statements. So it means that these statements are now under observation. So whenever the statement is generating any error, so don't directly go outside. Don't exit my program. Yes, I have handled this exception. Now how to handle this exception? Which exception you have to handle? Yes, you have to just give the name of it. Like try this statement except zero division error. So it means that if the zero division error, this exception is coming, then don't exit my program. The statement that I have written here, the statement has to be executed. Okay, तो मतलब अगर कोई भी एरर आता है तो एरर आने के बाद में क्या करना है ये आपको यहाँ पे लिखोगे. So what happened here if you have written these statements, then the program is not going exited. It is not exited. It will execute the next line of this program. So main will be execute here. Okay. So yes, I can modify here after the try block. Okay, so yes, it will print after the try block. Yeah, so if where it will go very fine if my program by giving some certain inputs, if my program is not exited, then it will execute this statement after the try block. Yeah, let's see here. Let's give the some inputs like 5 and 2. Yes, c equal to 2.5. So yes, this statement executes. This also executes, and this is not generating any error because a is 5 and b is 2, and c get printed, and after c get printed, now these 4 statements I is not generating any error. Okay, इसमें कोई भी error generate नहीं हुआ. So if there is no error get generated, it will go and print the next statement. It will execute the next statement after that try and exit block. Yes, students, are you getting this? Type yes if you are getting this. अगर कोई भी अगर एक्सेप्शन नहीं आता तो क्या आएगा? ये होने के बाद में जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा, दैट स्टेटमेंट इज गेट एग्जीक्यूटेड. Yes, type yes in the chat box if you are getting this. Okay, लेकिन अभी देखो, we are giving some inputs which is might generate the error. Okay, so yes, 5 and 0, yes, it is generating the error. So let's see here, the first statement get execute, second get execute, but while executing the third statement, the error get generated. And what is that error? The error is yes, let's see here the print value. What is the print value? Denominator is 0. Yes, we have printed here, print error denominator is 0. So it means that this zero division error is get caught by this try except block. It means that which error is coming? The zero division error is coming here, zero division error. So you can specify a particular error also. So if this error is coming, then do this. Okay, तो यहाँ पे देखो, अगर जीरो डिवीजन एरर आता है, इसका मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर 0 दिया है, तो चलो डिनोमिनेटर 0 दिया है, ऐसे एरर यहाँ पे लिख लो. And yes, it will not exited your program. The next line is get executed. The next line execute होगा ही, मतलब सिर्फ इसने इसको एरर दे दिया.
Okay, इसने error दे दिया. Okay, so what we can do, we can just put this into the while statement, like while true. Okay, while true, or simply I just put it here, flag is equal to 0. Flag is equal to 0. And while if flag equal to 0, flag equal, अगर flag 0 है, okay, अगर flag 0 है ना तो execute करते रहना है. Okay, and if this statement get executed, flag becomes 1, and you are get out of this loop. Okay, तो देखो यहाँ पे ये प्रोग्राम मैंने किया है. अगर आप 5 और 0 देते हो, so it is continuously asking the number 5 0, continuously asking the number. आप 0 जब तक डिनोमिनेटर देते रहोगे ना तब तक वो पूछता रहेगा. सब 2 and 0 फिर से पूछेगा. लेकिन मैंने प्रॉपर इनपुट डाल दिए 5 and 6. ओके, 5 और 2. Okay, so yes, it will terminate the flag, it will terminate the loop, and yes, we are getting the output as c equal to 2.5, and yes, and your program is not even exited. Your program is not even exited. Getting this? So you can try this program. तो मतलब जब तक आपको सही से इनपुट नहीं मिलता तब तक ये कंटिन्यूअसली आप एग्जीक्यूट करते रहो. जब आप डिनोमिनेटर 0 डालते हो तो क्या होता है, फ्लैग इक्वल टू 1 इट नॉट एग्जीक्यूटेड. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जनरेट हुआ है एरर. तो अगर यहाँ पे जनरेट हुआ है एरर तो यही से डायरेक्टली एक्सेप्ट के ऊपर चला जाता है. तो एक्सेप्शन कौन सा है? डिनोमिनेटर इज 0. यस स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग दिस? How I have implemented this? जब तक आपका इनपुट नहीं आता तब तक ये कंटिन्यूसली करते ही रहना है. ओके, या आप इस तरीके से भी कर सकते हो. यस, व्हाट हैपेंड, सपोज दूसरा एक एरर देखो. अगर सपोज मैंने नंबर डाला 5 और सेकंड नंबर मैंने गलती से मैंने ए डाल दिया. सो यस, एरर. तो कौन सा आया? एरर पार्सिंग एरर. कौन सा आया? पार्सिंग एरर है. तो वैल्यू एरर है. एक्चुअली इट विल जनरेट द वैल्यू एरर. वैल्यू एरर. तो वैल्यू एरर मतलब क्या हुआ कि you have entered the non-integer number. मतलब a enter किया. A is not an integer. A cannot be converted into the integer. So yes, which error will be generated? Value error will be generated. Okay, value error will be generated. तो value error generate हुआ तो मैंने यहाँ पे caught किया. Okay, यहाँ पे मैंने catch किया. ये catch किया हुआ, ये अगर catch किया करते हो तो यहाँ पे parsing error यहाँ पे आ जाएगा. Yes, students, are you getting? So how many errors we can actually caught? Yes, number of error. मतलब ऐसे नहीं कि आप एक या दो ही error. So if you want to caught the if you want to catch the different type of the error, आपको लगता है कि ओके ये दूसरा भी error कर सकता है. मतलब इसमें ये दो error तो हो सकते हैं. तीसरा error कौन सा हो सकता है? सब undefined error or the name error. Okay, name error. ये name error भी इसमें हो सकता है. तो मैं यहाँ पे कर दूंगा, यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो, या कोई एनी स्टेटमेंट यू कैन आल्सो प्रिंट, यू कैन आल्सो एग्जीक्यूट. जो अगर एरर आते हैं तो क्या करना है ये आप कर सकते हो. जस्ट लाइक सपोज इफ देयर इज अ नेम एरर इज देयर, सो यू कैन टाइप हियर अनडिफाइंड symbol like this here, suppose multiply by d. इस तरीके से आपने किया. and yes, मैंने किया 5, मैंने किया 2. so yes, which error I'm getting? undefined symbol. यहाँ पे name error आ गया. क्यों? because d is not defined here. d डिफाइन नहीं हुआ. तो d डिफाइन नहीं हुआ तो मैंने एक्सेप्शन कैच किया. लेकिन देखो आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस एक्सेप्शन द नेक्स्ट स्टेटमेंट गेट एग्जीक्यूटेड. so yes, it means that your program is not terminated. program terminate नहीं हुआ. yes. So if you don't want to terminate your program abnormally, then you have to handle that particular exception. So if no exception occurs during the execution of a statement in try block, control goes to the first line after the except block. Yes, we have seen that. And if an exception occurs during the execution of the statement in try block, an exception is raised and the rest of the try block is skipped. So if there is a 0 division error, so only this statement get executed. This value error and name error will not be executed. Okay, तो मतलब अगर कौन सा error आया, मैच करता है, error आया लेकिन कौन सा आया, 0 division आया, value error आया, कौन सा error आया, which error has come, so it will match that and it will execute a particular statement inside it. Getting this? So yes, yeah, this is the same thing.
So multiple except block for one try block can be added. Yeah. And at a time, only one except block goes to be worked. Yeah. So we have already seen this. So we can add the multiple except block. Yeah. We have added the 3 except blocks here. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 except block. But suppose what happen if you don't know which error is going to come. कौन सा error आने वाला मुझे पता ही नहीं है. I don't know the name. I don't know the name. मुझे क्या करना है, कोई भी error आया, any error is coming, any exception is coming, I have to handle all the exception. If you want to handle all the exception, then don't write the particular specific name of that exception. You just have to write down the except. आपको क्या लिखना है, सिर्फ except लिख दो. तो जब आप except लिखोगे तो इसका मतलब है कि consider all exception, consider all exception, consider all exception generated by these statements. कौन सा भी exception हो generate करे, आपको यही एक्सेप्शन, यही आपको प्रिंट करना है, यही स्टेटमेंट आपको एग्जीक्यूट करना है. तो देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 5 और 2 फिर से देता हूं तो यस देयर इज नो एरर. ओके, बट लेकिन यहाँ पे मैंने दे दिया 5 and 0. यस द एरर इज एक्सेप्शन ऑकर्स. यस अभी देखो जीरो डिवीजन एरर आया था तब भी एक्सेप्शन ऑकर्स ऐसे ही आया. मैं यहाँ पे दूंगा 5 और a, देन ऑल्सो द सेम एरर एक्सेप्शन ऑकर्स. Getting that? यहाँ पे अगर मैं multiply by d करूंगा, then also there is a exception occurs. So there is a name error now. Okay, there is name error. Getting this? So it means that if you want to catch all the exception, if you want to handle all the exception, then just you have to put down except here. And if you want to handle specific exception, स्पेसिफिक मतलब जीरो डिवीजन एरर आता है तो ही हैंडल करना है. सो यू जस्ट हैव टू राइट डाउन द नेम ऑफ दैट एक्सेप्शन. ओके, ये एक्सेप्शन आपको पहले देखना पड़ेगा कौन सा एक्सेप्शन आता है. एंड एज इट इज दिस इज द क्लास नेम, जीरो डिवीजन एरर, दिस इज द नेम ऑफ द क्लास नेम एक्सेप्शन, क्लास नेम ऑफ द एक्सेप्शन. ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए कि उसका नाम क्या है. ओके, देन आफ्टर दैट यू कैन ऐड इट हियर, यू कैन ऐड इट हियर. So if you are writing only single, अगर आप सिंगल अगर आप करते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे जीरो डिवीजन डिवीजन आई थिंक डिवीजन एरर यस डिवीजन एरर. If this kind of the exception you have handled, and let's see here 5 and 2, yes that's run fine. But suppose if I'm giving a 5 and a, नाउ ए दिया है मैंने, तो ए मतलब 5 एंड ए, तो आपका जो प्रोग्राम है यहीं पे फेल हो जाएगा. ए कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द इंटीजर. सो लेट्स सी हियर, सॉरी लेट्स सी हियर. सो देयर इज अ वैल्यू एरर. कौन सा है, वैल्यू एरर. सो इनवैलिड लिटरल फॉर द इंटीजर विद द बेस 10 ए. सो यस एंड योर प्रोग्राम इज टर्मिनेटेड. आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया. ओके, तो अगर आपको करना है कि नहीं मुझे सभी टाइप के एक्सेप्शन मुझे हैंडल करने हैं, सो यस यू हैव टू राइट डाउन द ओनली एक्सेप्ट. आपको सिर्फ एक्सेप्ट लिख दो, सभी एक्सेप्शन हैंडल हो जाएंगे. ऑल द एक्सेप्शन विल बी हैंडल. यस स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग दिस? टाइप यस इन द चैट बॉक्स इफ यू आर गेटिंग दिस, हाउ टू राइट डाउन द पर्टिकुलर एक्सेप्शन and how to handle all the exception. Yes, if you are getting this. कैसे लिखना है, जो भी स्टेटमेंट आपको लिखने हैं आप कैसे लिखना है, विद द टैब. ओके, टैब देके लिखने, टैब देके लिखने. सो विद द इंडेंटेशन यू हैव टू राइट डाउन दिस. ओके, पूरा इंडे मतलब दिस 4 स्टेटमेंट्स आर अ पार्ट ऑफ द ट्राई ब्लॉक. ओके, एंड दिस one statement is a part of the except block. Yeah, so you can write down like this. So just follow this indentation. Okay, okay, yes. Okay, so yes, we'll start with the next block, and that is the else block. Okay, so try except block statement may have also an optional else block. Now writing the else block is not compulsory, it is optional. So if it is present, it must present after all the except block. So else block should be present at the last. Else block should be present at the last. Now, but at what time the else block will execute? The control goes to the else block if no exception occurs during the execution of the try block. So if all these statements, आपने जो भी statement दिया, all these statements get executed fine. Okay, it is executed well, and there is no exception or no error will generated, then else block will execute.
So if there is no exception, else block will be executed. And in case of exception, the except block will be executed. If there is a exception is there, the particular except block will execute. लेकिन यहाँ पे कोई भी एरर आया ही नहीं है, कोई एरर नहीं आया, तो else block execute हो जाएगा. Getting that? तो just take an example of this. और जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया है 10, 20, 30, 40 and 50, और मैंने क्या किया है कि यहाँ पे सभी जो वेरिएबल से first I have read the 10 where I and j also printed, so j equal to I into I, तो उसका मैंने square कर दिया and that variable and the square get printed. Okay, so let's see here. And yes, when there is all the statement get executed fine, the else block में क्या होगा, total number process और यहाँ पे length of the list will be printed and you are deleting that particular list. जो भी list यहाँ पे किया है वो सब delete हो जाएगा. As you see here, 10, 100, 20, 400, 30, 900, 40, 1600 and 50 is 2500. So yes, else block is executed and yes, total number process 5 is get printed here. Getting this? लेकिन suppose एक ऐसे करते हैं कि यहाँ पे कुछ error लाते हैं. Okay, there is an exception. Okay, just like take an example of this, suppose st, okay, or simply s. Okay, so yes, instead of giving this all numbers as an integer, mistakenly I have make this as a string. एक string आ गया, तो अगर string आ गया तो यहाँ पे fail हो जाएगा. देखो, integer of s not defined. Okay, integer of s हम convert नहीं कर सकते. We cannot convert the s into integer. Okay, so yes, how to convert? How to convert? Yes, let's see here. If there is an exception, कौन सा error आएगा? वहाँ पे value error आएगा. So yes, we have handled that exception. If this value error exception is coming, then yes, you should print invalid type. क्या प्रिंट होगा? इनवैलिड टाइप. लेकिन यहाँ पे देखो, जब भी एक्सेप्शन यहाँ पे प्रिंट होगा, व्हेन देयर इज अ एक्सेप्शन इज जनरेटेड, द एल्स ब्लॉक विल नॉट एग्जीक्यूट. तो एल्स ब्लॉक में जो भी लिखा है ना वो एग्जीक्यूट नहीं होगा. तो चलो देखते हैं. तो देखो यहाँ पे इनवैलिड टाइप आया, लेकिन एल्स ब्लॉक में जो भी लिखा था दैट विल नॉट बी executed. That will not be executed. Yes, students, are you getting the else block type else in the chat box? Yes, if you are getting this, type yes in the chat box. देखो else block कब execute होता है? जब कोई भी exception नहीं आया तब else block execute होगा. Okay, yes. So yes, if there is no exception, yes, else block will execute. If there is an exception, yes, else block will not execute. So yes, the statement you want to execute, if there is no exception, you have to put that statement into the else block. Okay. Now the next one is finally block. अभी finally क्या? Finally also the optional block. Else हो गया, finally हो गया, ये क्या हो गया? ये हो गया ऑप्शनल. लेकिन else और finally में थोड़ा डिफरेंस है. else block है ना, else block कब execute होता है? जब कोई भी exception नहीं आया तब else block will execute. So if there is no exception, else block will execute. But finally will definitely execute. Finally will definitely, ये execute होता ही है. मतलब no matter exception occurs or not occurs. So if there is an exception, yes, finally executes. If there is no exception, yes, finally execute. Okay, तो finally का execution आपको मतलब finally execution ही करना है उसको. Okay, so whatever the statement you have written here, that all the statement has to be executed if there is an exception or not exception. Okay, so yes, let's see the same program we have given here. तो चलो देखते हैं कि पहले एक्सेप्शन करके देख, नहीं विदाउट एक्सेप्शन रन करते हैं 5 and 2. सो यस, प्रोग्राम एग्जिटेड सक्सेसफुली. देखो कोई एरर नहीं आया, एरर कुछ भी नहीं आया, कोई भी एरर नहीं आया. लेकिन यहाँ पे देखो फाइनली में क्या लिखा है? प्रोग्राम एग्जिटेड सक्सेसफुली. यस, प्रोग्राम एग्जिट सक्सेसफुली, गेट सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड. अभी देखो कोई एरर करके देखते हैं 5 और 0. ओके, 5 और 0 तो 0 डिवीजन एरर आ गया. देखो एरर आ गया, 0 डिवीजन एरर, डिनोमिनेटर इज 0. And yes, finally block is also executed. Yes, so else block, else execution of the else block is depending on exception occurs or not occurs. If the exception occurs,
then else block will not execute. If the exception no occurs, then else block will execute. But finally block will execute no matter here the exception occurs or not occurs. उसके नाम भी लिखो, ये finally execute होगा ही, 100% execute होगा. So as finally block is generally used for releasing external resources like files, network connection, database connection, irrespective or of whether the use of the resource was successful or not. मतलब हमें क्या करना है कि एक फाइल ओपन किया है, सपोज वी हैव ओपन अ फाइल, एक फाइल यहाँ पे ओपन किया, अभी वो फाइल मुझे क्लोज तो करना ही पड़ेगा, एक्सेप्शन आया या नहीं आया कुछ भी है, मुझे वो तो मुझे करना ही पड़ेगा, क्लोज तो करना ही पड़ेगा. सो जैसे डेटाबेस कनेक्शन मैंने ओपन किया, उसको क्लोज तो करना ही पड़ेगा. तो एक ये कैसे लिखूंगा मैं, जो कंपल्सरी स्टेटमेंट है ना वो मुझे फाइनली में लिखने पड़ेंगे. ऑल द कंपल्सरी स्टेटमेंट शुड बी एग्जीक्यूटेड और रिटर्न इन अ फाइनली. Okay, now we can write down a program with a try block, except block, else block and finally block. तो फाइनली ये सबके साथ पूरा का पूरा भी मैं लिख सकता हूँ. जैसे कि अगर एरर आता है, कौन सा एरर आया, जीरो डिवीजन एरर, तो ये एग्जीक्यूट होगा. लेकिन अगर ये एरर आता है तो एल्स ब्लॉक विल नॉट एग्जीक्यूट, लेकिन फाइनली तो एग्जीक्यूट होगा ही. लेकिन सपोज देयर इज नो एरर, कोई भी एरर नहीं आया, तो क्या होगा, एल्स ब्लॉक भी एग्जीक्यूट होगा और फाइनली भी एग्जीक्यूट होगा. चलो देखते हैं 5 and 2. सो देयर इज नो एरर, सो यस आउटपुट भी आया, नो एक्सेप्शन ऑकर, एल्स ब्लॉक भी एग्जीक्यूट हुआ और यहाँ पे गया प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, ये भी आ गया. ओके, लेकिन अभी करते हैं 0. देखो आ गया, डिनोमिनेटर एरर इज 0, but here you see here else block is not executed because there is an exception. Now but here finally is successfully executed. finally यहाँ पे execute होगा ही. क्यों? क्योंकि finally को फर्क नहीं पड़ता exception आया या नहीं आया. yes, और एक एग्जांपल दिया यहाँ पे. so list 1 equal to 1 2 3 4 5 6 7, I equal to 100. now I less than length of the list 1, then list 1 of I equal to 10, and yes, else print index should not be less than length of the list. Let's run this program here. So index should not be less than length of the program. Okay, तो ये देखो यहाँ पे किया है कि 100, मतलब without the try and catch block you can also do the program without try and catch block, but you have to consider all the cases. लेकिन यही प्रोग्राम मुझे with the help of the ये लिखना है अपने, with the help of the try and block, try and except block लिखना है. तो मैं कैसे लिखूंगा, देखो try, okay, list 1 is equal to, और simply list 1 ये try block में लिखने की जरूरत नहीं है. you can put the list 1 here. list 1 is equal to 1 2 3 4 5 6 7, and yes, in the try block we'll put here I equal to 100, and we'll put here if, or simply list of I, list 1 of I is equal to 10. okay, so we're trying to modify it, and yes, we'll put the exception. First we'll see what type of the exception it is generating. What type of exception is generating? Okay, तो देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, list of I equal to 10 किया. I'm trying to modify, and let's print it. print of list 1, list of किया, तो कौन सा एरर है, index error है. देखो there is a index error, that is last assigned I index out of the range. मतलब मैंने यहाँ पे I equal to 100 किया है, तो ये क्या होगा, list 1 of 100. list 1 of 100 is not present because there is only 7 items are present. तो index कितना होगा, 6 होगा, maximum index 6. so yes, so how I can handle this, you can handle this by writing these statements into the try catch block. so try this statement except 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 which, what is the name of the error, index error. And yes, what statement you have to print here. so yes, the index value should not be, or should be less than or equal to comma length of
list one. Okay, so I think it is only less than list one. Okay, so let's see here. So index value should be less than 7 only. Okay, 7 से लेस होना चाहिए, 7 से भी लेस होना चाहिए. तो अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू 4 कर दूं तो यस माय प्रोग्राम इज वर्क वेरी फाइन. तो ये देखो फोर्थ वाला हो गया 10 हो गया यहाँ पे. लेकिन यहाँ पे मैंने अगर 40 कर दिया तो ये रह जाएगा इंडेक्स वैल्यू should be less than 7 से ही लेस होना चाहिए. So yes, this program we have converted into the try except block. Yes, students, are you getting this? Try except block. Type yes in the chat box. So any doubts in the exception handling? So what you have to do, you can go to the Google and yes, you have to find out what are the Python exceptions. Okay, so yes, there is a built-in exception in a 3.10. So you can go through it. What are the different exceptions are there? So these are the list of the exception. So exception, then arithmetic error, buffer error, lookup error, assertion error, attribute error, UF error, floating point, int error, generator exit, import error. These are the all are the names of the exception. Oh, क्या करता है सब? This is stop iteration. देखो, raised by built-in function next and iterator underscore next method to signal out there are no further item produced by the iterator. हमने iterator देखा था तब ये iteration आया था. देखो ये exception आया था stop iteration. ओके, तो उसको हैंडल कैसे करते हैं, जनरेट कैसे कब होता है वो पहले बताना चाहिए. सो देन वी कैन हैंडल इट. यस, लॉट्स ऑफ द एक्सेप्शंस आर देयर. या ये हायरार्की दिया है देखो, बेस एक्सेप्शन, उसके बाद में बेस एक्सेप्शन, देन एक्सेप्शन, and exception is having the subclass as stop iteration. मतलब ये यहाँ पे दिया है कि these are the hierarchy, like this is the base class और base class का this is the derived class. ये derived class का भी और एक derived class is stop iteration. Arithmetic error is there, and in that arithmetic error there is subclass is there, floating point error, overflow error, zero division error. Getting that? These are called as a class hierarchy. ये सब कुछ दिया यहाँ पे दिए कि कौन सा क्लास किसमें है, कौन सा क्लास का कौन सा बेस क्लास है, ये सब कुछ यहाँ पे दिया है. सो यस, व्हाट आई एम डूइंग, आई एम शेयरिंग दिस HTML on the your group. So yes, you can go through it. Okay, ये पूरा आपको जाना है, exception handling पूरा आपको समझना है. Yes, students, are you getting this? So yes, any doubts or any question if you are having regarding to the Python? Yes, we'll take some one question and answer session of total 5 to 10 minutes. And if you have any question, I will be answering. And yes, after that, we'll start with the new topic. Yeah. So yes, over to you. So if you have any question, yes. Okay, and one more point actually, your name actually Aditya Shukla. Yes, you have to rename with your employee ID and the name. Yes, who is this Arnab Sangam? Yeah, Arnab Sangam. Yes, containership. Yeah. Yes, so who has asked? Aditya. Yes. Aditya, so yes, containership is giving the relationship between the two classes. Okay, so generally we know the relationship as a inheritance. Like if you have the existing class and if you want to add something to it, so yes, if you want to modify it without changing its real implementation or the existing or the original implementation, you are deriving that class and you are making a new class and you can add the new thing inside it. That is called as a inheritance. Okay, but what is containership? In a containership, actually there is
no such a direct relationship between the two classes, like you are getting all the members inherited into this. But what is there? Suppose best example of containership is there, like suppose you want to make one ceremony, okay, suppose one wedding ceremony, okay, आपके घर में ना एक वेडिंग सेरेमनी अरेंज करना है, ओके, तो वेडिंग सेरेमनी अरेंज करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, ओके, सबसे पहले आप क्या करोगे, तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे कि आपको किस किस को बुलाना पड़ेगा, तो आपको पहले तो डेकोरेटर जो होते हैं, डेकोरेशन करते हैं, उनको बुलाना पड़ेगा, उसके बाद में आपको बुलाना पड़ेगा कि कोई सपोज मेहंदी लगाते हैं तो उसको बुलाना पड़ेगा, ओके, उसके बाद में आपको बुलाना पड़ेगा कि कोई हॉल अरेंजमेंट वाला होगा तो उसको बुलाना पड़ेगा, उसके बाद में कपड़े वाला होता है उसको बुलाना पड़ेगा। सो यस, व्हाट इज दिस, ये सब ये कितने टाइम के लिए आपने बुलाया, ओके, सो यू इनवाइटेड देम ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम। तो ऐसे ही जैसे कि सपोज देयर आर सम एग्जिस्टिंग क्लासेस आर देयर एंड सपोज इफ यू वांट टू मेक योर ओन क्लास एंड इफ यू वांट टू यूज दैट क्लास एज इट इज, जैसे है ना वैसे, उसको मॉडिफाई नहीं करना है। इफ यू वांट टू यूज दैट क्लास एज इट इज, सिर्फ उसके फंक्शन हमें करना है। जैसे कि मैं क्या बोलूंगा कि डेकोरेशन वाले को बोलूंगा कि और बोले कि ओके ये काम करो, ये जो हॉल है ना, हॉल में अच्छी तरह ये डेकोरेशन, उसको इनपुट दो कि ये मुझे मतलब रियल फ्लावर्स में करना है या आर्टिफिशियल फ्लावर में करना है, उसको इनपुट दो एंड यस सिर्फ उनको बोलो कि यस आई वांट टू डू अ डेकोरेशन ऑफ दिस हॉल। नाउ हाउ टू डू द डेकोरेशन, यस ही विल हैंडल इट, ओके, ही विल हैंडल इट, दैट क्लास विल रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, ओके। तो इसको बोले कि हैज अ रिलेशनशिप, उसको बोले हैज अ रिलेशनशिप। ये एग्जांपल मैंने दिया था, देखो कि द कॉलेज हैज अ प्रोफेसर, द कॉलेज हैज अ स्टूडेंट। जैसे कॉलेज हैज अ स्टूडेंट, एक फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, फोर्थ ईयर में का उसने सीख के पूरा चला गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम द न्यू स्टूडेंट इज कमिंग, इन एवरी ईयर द न्यू स्टूडेंट इज कमिंग। सो यस, द कॉलेज हैज अ स्टूडेंट, मतलब वो नया स्टूडेंट आया, उसने एडमिशन लिया, कॉलेज ने उसको सिखाया, उसको कुछ अपग्रेडेशन किया और उसके बाद उसमें मतलब वो यूज किया एंड देन आफ्टर दैट ही लिव इट, द स्टूडेंट इज लिविंग इट। कॉलेज हैज अ प्रोफेसर, प्रोफेसर रिक्रूट करना पड़ता है, ही इज रिक्रूटिंग, तो प्रोफेसर के पास जो भी उसका एक्सपर्टी है, दैट यूजिंग दैट एक्सपर्टी द कॉलेज इज यूजिंग इट, कॉलेज इज यूजिंग इट, यस। तो it means that he is not modifying, you are not modifying, you are not changing that particular class, you are using that class. If you are using that class ready-madely in your class or in your program, then that is called as a containership, that is called as a containership. So yes, it means that college contains the professor, college contains the student, college contains some other things also, yes. So ready-made class, ready-made objects, if you are directly using it, just take an example here, index error. Index error kya hai? It is a ready-made class and you are directly using it. You are directly using actually हमने यहाँ पे कोई class define नहीं किया, but suppose we have defined this all this thing in a one of the class. ये class में लिख दिया मैंने और class में मैंने यहाँ पे index error use किया. So yes, we can say that here the index error, this our class is having the index error, has a relationship. Yes Aditya, are you getting this? अगर आप कोई भी रेडीमेड क्लास अगर आपके क्लास में डायरेक्ट यूज करते हो तो आप बोल सकते हो कि we have the has a relationship of it and it's called as a containership which contains it, okay. इसमें हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। इन अ कंटेनरशिप we are not modifying the existing class. In a inheritance we are modifying the existing class. So in a containership, the old definition will be remain same, but in a inheritance, you are giving the new definition to the existing class. That is called as the inheritance. So yes, students, any other topic? Yes, lambda function. So yes, आकाश, लैम्बडा फंक्शन क्या होता है? देखो एकदम सिंपल है। देखो सब कोई भी अगर फंक्शन हमें डिफाइन करना है कि जैसे कि मैं यहाँ पे एक चेक इवेंट नाम का एक फंक्शन में बनाऊंगा which will
check the particular number is a even number or not. Okay, so I want to write down one definition. Okay, और function लिखना है तो मैं simply ये करूँगा कि if the number modulo 2 equal to 0, then you can print it here, or simply you can return the 1. You can return the 1. Okay, otherwise else return 0. Okay, now this is the simple function, and if you want to check with its answer, so it is 1 or 0. So if you are calling that function check underscore num function, and you are giving some values of 23, तो अगर वो 0 रिटर्न आता है तो इसका मतलब है कि it is an odd number. It is an odd number. Check even, not number. Check even. So it is 0. 0 represent means it is not a even number. लेकिन अगर यहाँ पे मैंने even दे दिया तो it is an even number. Okay, so this is a normal definition of the function. But suppose if you want to give some if you want to write down the function without name, that is called the anonymous function. कभी कभी ये लगता है हमें कि we want to give some definition, but there is a very small definition, short definition. जैसे यहाँ पे देखो, very short definition. So what I can do, I can write down the lambda function. So yes, lambda function is very similar like this. जो हमने यहाँ पे जो लिखा है वो same ही function है. Only difference is that this function is having its own name. इसका खुद का नाम है check even, check underscore even इसका खुद का नाम है. But lambda function LMBDA, lambda function is not having its name. उसका खुद का नाम नहीं होता, नाम नहीं देता. It is called as an unnamed function or anonymous function. जैसे कि इसका syntax होता है lambda num, and after that, so yes, we can write down here 1 if num modulo 2 equal to 0, else 0. Okay, else 0. Now this is the same function I have written. ये same function लिखा है. Okay, so इसका कोई नाम नहीं है. So if you want to call it, if you want to call this, you have to specify this in a bracket, और bracket देने के बाद में आपको इसको input देना पड़ेगा. So how many in argument it is receiving? Only one argument. तो इसको input दे दो, जैसे 12 22 दे दिया तो आउटपुट क्या आ गया 1. मतलब क्या है कि इट इज इवन नंबर. ओके, लेकिन वही अगर मैंने यहाँ पे 21 दे दिया, सो इट इज ऑड नंबर, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा. सो यस, सो लैम्बडा फंक्शन इज द एनोनिमस फंक्शन. ये सेम फंक्शन होता है जो हम एग्जिस्टिंग फंक्शन होता है उसी को, बट वी कैन गिव द नेम टू द लैम्बडा फंक्शन आल्सो. जैसे कि मैं यहाँ पे दे दूंगा fun is equal to this. So yes, I can call that fun function. I can call the fun function. So fun of 22, so it is 1. Okay, fun of 21, it is 0. So yes, so with the lambda function is the function definition which is not having the name. Very simple definition. Lambda function is the function which is not having the name, which is not having. It is called the anonymous function. Anonymous function. But we can give the name to that lambda function also. And why, when we use the lambda function, when there is a very small definition of the function is there, very small definition, छोटा definition है, तब हम ये lambda function use करेंगे. छोटा जगह है वहां पे हमें डिफाइन करना है, सिंपल वहां पे यूज करना है. और अदरवाइज व्हाट यू कैन डू, वी कैन डिफाइन द सिंपल फंक्शन. अगर थोड़ा बड़ा फंक्शन है तो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, उसका नाम डायरेक्ट यूज कर सकते हो. यस आकाश, आर यू गेटिंग दिस लैम्बडा फंक्शन? तो ट्राई टू राइट डाउन सम लैम्बडा फंक्शन फॉर द डिफरेंट एप्लीकेशन. जैसे कि लीफ ईयर का लिख के रखो, या सब चेक करना है कि एक पिक्सल है, पिक्सल रेड है, व्हाइट पिक्सल है, या ब्लैक पिक्सल है. यस, फिल्टर फंक्शन. ओके, तो फिल्टर फंक्शन जनरली क्या करता है, इट इज फिल्टर आउट. जस्ट लाइक हमने कॉम्प्रेहेंशन में हमने लिखा था, देखो कॉम्प्रेहेंशन में हमने ऐसे किया था कि वी विल जस्ट फिल्टर आउट लिस्ट. हमें एक लिस्ट क्रिएट करेंगे और लिस्ट में हमें कुछ फिल्टर्ड रिजल्ट चाहिए. So the same thing we will write down with the filter function. जैसे कि मैं यहाँ पे करूंगा कि एक फंक्शन दिया है, just like same, check this same function, even function है. तो मेरा सब एक लिस्ट है, list 1 is there. Okay, list 1 is there. List 1 is having some numbers. Okay, कुछ तो numbers यहाँ पे डिफाइन किए. Okay, and I want to filter out this list 1. मुझे क्या चाहिए कि मुझे इसमें से सिर्फ even number चाहिए. I want to make
I want to separate out the filters. I want to make only the, I want to filter out only even numbers. तो even numbers filter out कर तो आप मैन्युअली करके बैठोगे तो आप इसको ऐसे लगेगा even underscore list, even underscore list. तो मैन्युअली करके बैठे तो आप बोलेंगे ओके सर 54 भी है, 56 भी है, 76 भी है, और उसके बाद में और एक 54 भी है, और बस इतनी ही 4 ही है. तो मैन्युअली करना है या फिल्टर फंक्शन यूज करना है. फिल्टर फंक्शन एकदम सिंपल होता है. आप यूज करोगे फिल्टर, और फिल्टर में कौन से फंक्शन यूज करना है. आई थिंक फंक्शन ही होता है. यस, चेक अंडरस्कोर इवन एंड आई थिंक लिस्ट वन. ओके, आई थिंक देयर इज अ फंक्शन, या मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है पहले कौन सा यूज होता है. सो लेट्स चेक हियर आउटपुट आया कि नहीं. सो लिस्ट ऑफ इवन अंडरस्कोर लिस्ट. So yes, I'm getting the same output. Yeah. So there is a function. पहले function होता है, उसके बाद में वो function कौन से ऊपर, कौन से लिस्ट के ऊपर लगाना है आपको. लिस्ट वन के ऊपर लगाना है. ओके, तो ये क्या करता है, कौन से नंबर्स इंक्लूड करेगा, कि ऐसे नंबर इंक्लूड करेगा कि जो जिसने 1 रिटर्न किया है. अभी देखो फर्स्ट 23 है. 23 अगर इसको दिया जाए तो ये 1 रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा. क्यों? क्योंकि नम मॉडुलो 2 इक्वल टू 0 कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो एल्स में 0 रिटर्न करेगा. तो यस, इफ द फंक्शन इज रिटर्निंग 0, दैट नंबर विल नॉट बी कंसीडर. तो यस आदित्य, ये किस लिए होता है कि ये ऐसा है कि जब तक ये पर्टिकुलर इनपुट दिया है, पूरी इनपुट में से आपको कुछ ऐसे नंबर चाहिए डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, कंडीशन के हिसाब से. Yes, getting? एक एग्जांपल देते हैं. देखो जैसे कि एक लिस्ट दिया है, सपोज नेम्स. ओके, नेम्स इज इक्वल टू, आई थिंक ये हमने लिया था शायद, जैसे कि सपोज GNESH. ओके, महेश, यश, कीर्ति, नीलम, ओके, एंड विजय. ओके, अभी ये देखो मुझे क्या करना है. आई वांट द नेम्स, आई वांट द नेम्स फ्रॉम दिस नेम्स डिक्शनरी which is having the A inside it. जिसके अंदर A होगा ना, बस वही नेम चाहिए. A होना चाहिए. A जिसमें है ना वही होना चाहिए, यही चाहिए. तो आई थिंक A बस इसी में, कीर्ति में ही नहीं है. ओके, और सिंपली हम करेंगे कि जिसमें A नहीं है ना वो रिटर्न करेंगे. ओके, आई वांट टू फाइंड आउट द नेम which is not having A, स्मॉल A नहीं है. तो हम यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन. ओके, यहाँ पे हम करेंगे और सिंपली सर्च इस तरीके से, सर्च और सर्च इस तरीके से करेंगे, और हम इट विल टेक द इनपुट एज सपोज नेम. ओके, एंड यस क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे इफ ए नॉट इन नेम. ओके, अगर नेम में ए नहीं है तो क्या रिटर्न करना है, इट विल रिटर्न 1, else return 0. Okay, so let's call it. So yes, it is or simply list one कर दे. list one is equal to yes, list one equal to कैसे करेंगे, फिल्टर फंक्शन यूज करेंगे. फिल्टर यूज करेंगे. फंक्शन का नाम क्या है, सर्च, और कौन से इसके ऊपर लगाना है, नेम्स के ऊपर लगाना है. ओके, अभी now it will return the object of filter. Okay, so we have to convert it into the list. So yes, we'll convert it into a list. So list of list one इस तरीके से. And let's see here. So yes, there is only one name which is not having A, Okay, तो मुझे ऐसे फाइंड आउट करने की उसमें सिर्फ A होंगे. A नहीं है ना, वो मुझे इंक्लूड नहीं करना है. So yes, देखो सभी में गणेश, महेश, नीलेश, इसमें सभी में A है. तो यस, ये इंक्लूड होगा. कीर्ति में ए नहीं है तो वो फिल्टर आउट नहीं हुआ. ओके, मुझे ऐसे फाइंड आउट करना, उसमें SH है, SH. सो यस, गणेश, महेश, SH, यश, इसमें ही SH है, बाकी में नहीं है. सो यस आदित्य, आर यू गेटिंग दिस? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द
एप्टीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू, पाइथन एप्टीट्यूड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. Okay. So yes, any other questions? So yes, you can go through all these notebooks. मैंने जो आपको दिए सभी notebook, so you can go through it. So yes, सभी मैंने 1 to 14 ये पूरे दिए. So एक एक करके आपको सभी में जाना है, फिर से रिवाइज करना है. वेरी इंपॉर्टेंट. अगर ये आप कर लोगे ना, so it will very helpful for your placement also. प्लेसमेंट के लिए अगर पूरा बस इतना ही करते हो ना, बस इतना ही, दूसरा कुछ भी नहीं किया तो भी बहुत इनफ है, वेरी इनफ, एंड यू विल गेट अ वेरी डिसेंट प्लेसमेंट. जस्ट ट्राई टू सर्च सम पाइथन coding. Okay, Python coding questions. Okay, there are some websites which are providing some coding question. ये देखो यहाँ पे Python tutorial coding question. So go through it. Try to solve that questions. Merge to sorted list. Okay, कैसे करना है? Get a word frequency. देखो word frequency करने हैं. Okay, ये पूरा दिया है, देखो इसमें दिया है, उसमें word frequency find out करने हैं. कैसे करेंगे? Okay, so just go through it. पहले उन्होंने कैसे किया वो देखो, उसके बाद में yes, you can participate in some I think hackathons, Python hackathons or hacker ranks. Hacker rank के ऊपर आप try करो. Yes, anyone on hacker rank? आप में से है कोई hacker rank के ऊपर? Yes, students, are you anyone of you? हैकर रैंक ऐसा एक प्लेटफॉर्म है कि एक्चुअली उसको साइन अप कर दो. साइन अप करने के बाद में ना यहाँ पे ना पाइथन के सभी प्रोग्राम्स होते हैं, देखो, और रैंक आपका बढ़ता है. जितने भी आप प्रोग्राम सॉल्व करोगे ना, उतना रैंकिंग आपका बढ़ता जाता है. देखो ये आज खत्म ही नहीं होगे. यस, देखो आप ज्यादा से ज्यादा जितने प्रैक्टिस कर सकते हो उतने प्रैक्टिस यहाँ पे करो. तो सबसे ये देखो, सॉल्व चैलेंज, से हेलो वर्ल्ड टू पाइथन. सो आई एम साइनिंग इन via Google. Okay, I have already done that. Okay, मैंने already दिया है, देखो. Okay, yeah, okay. So is print hello world. Okay. Yes, क्या करना है? Hello world और question mark, hello comma world. As it is, hello comma world, W capital और ये exclamatory marks. Yes, Python 3 hello comma WRLD and question mark. इस तरीके से करना है और सबमिट, रन कोड करके देखो आउटपुट क्या आता है. ओके, एक्सपेक्टेड आउटपुट चाहिए हेलो वर्ल्ड, हमारा भी वही आया. ओके, सो यस, सैंपल में वहां पे हुआ और सबमिट कोड कर दो. सो योर रैंक विल बी अप, एक रैंक आपका अप हो जाएगा. ओके, सो यस, सबमिशन गॉट द 5 पॉइंट आ गए. तो रैंक कितना है देखो, अभी रैंक कितना है, इतना है. आई थिंक इट इज 13,64,968. तो जितने आप क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करोगे उतना रैंक आपका बढ़ता जाएगा. एंड यस, एंड इट विल हेल्प फॉर योर TCS, इट विल हेल्प फॉर योर Infosys, बिकॉज हैकर रैंक के ऊपर से ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर टेकन. तो आप पहले अगर उसमें सॉल्व किए तो वहां पे आपको सॉल्व करने के लिए कम टाइम लगेगा. Yes, students, are you getting this hacker rank? So I think जो भी प्रोग्रामिंग में अच्छा है उसको सभी को हैकर रैंक के ऊपर प्रेजेंट होना ही चाहिए. एंड यस, यू शुड प्रैक्टिस ऑन इट आल्सो.